सॉरी टू कट यू ऑफ, बट सी देयर आर women जो हैं, बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी, ठीक है। ऐसा होता है कि समटाइम्स आप जो है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब रमजान आया, ठीक है, तो आप बहुत रिलीजियस हो जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर आवर कल्चर, मुस्लिम्स या जो भी, मेरे अपने घर में भी यही होता है, मैं किसी और की क्या बात करूं, यू नो। तो होता यह है कि जी रमजान आता है तो हम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो रिलीजियस हो जाते हैं, हमारे अंदर से जो है ना वो हमारा, मतलब हर चीज हम कि यू नो लाइक हम, नमाजें हमारी शुरू हो जाती हैं, हमारा ज़कात और सारी चीजें। बट जैसे ही रमजान जाने लगता है, या वो लड़कियां जिन्होंने, तो हम लोग ईमान होते हैं फर्स्ट। सेकंड ये है कि बहुत सारी लड़कियां जो हिजाब पहन लेती हैं और उसके बाद समहाउ वो उतार देती हैं, या समहाउ शैतान का वो जो भी व्हाटएवर XYZ होता है, कहते हैं ना कि वो उसके रास्ते पे हो जाता है या भटक जाते हैं। तो अगर वो दोबारा पहनना चाहें तो इज दिस यू नो समथिंग दैट दे आर ऑलवेज स्केयर्ड ऑफ, लाइक जैसे मुझे फील होता है कि नो लोग बोलेंगे ओ तुम तो अभी बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, एंड देन यू नो ऑल दैट, एंड देन गोइंग बैक, ओ अभी तो तुमने कल हिजाब पहना था, आज तुमने ये किया, परसों तुमने दोबारा हिजाब पहनी, तो देयर आर यू नो फ्लक्चुएशंस इज ऑलवेज देयर, बिकॉज शैतान तो है ना। तो आप क्या एडवाइस दोगे उन लोगों को? मैं आई रिमेम्बर जब मैं क्विट ऑलमोस्ट करने की तरफ जा रही थी ना, तो आई हैव ऑलवेज बीन इन लव विद हिजाब उस टाइम में, उस स्पेशली उस टाइम पे, एंड I was a non-hijabi and I really wanted to wear it, but that time I had not quit. So even I used to think कि मैं क्या करूं, because I was embarrassed. You know, this is the thing, we are in a time where people are so confident about their values. It's a shame. It's not a shame, but it's sad that we don't have that confidence. So I really want everyone to know that just do it. just just do it. Just आप don't जब care what एक people step think लेते हैं, and do. आप, it's not possible to not care. It will matter, it will keep. But remember, for every friction, for every problem that you're facing, आपको कोई ताना भी देता है कुछ भी, if it breaks your heart, remember who you're doing it for. Just remember who you're doing it for. और आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती हैं. Allah Ta'ala literally changes your heart. And for people who, it's actually very good to see. It's very heartwarming to see that for any person who is not practicing, वो एक step भी शायद रमजान में लेता है ना, it's actually, you know what it is? It's reflective of the feeble spirit of iman that is left in that person. And you never know, Allah Ta'ala maybe on that behalf guides you even more. That I told you कि Allah Ta'ala आपको hidayat, it's a journey that you have to make, and you are going to falter in that journey. It's not going to be smooth. You are going to sometimes fail, but you have to keep walking. And Allah Ta'ala will, you know, even if you start walking with feeble steps, Allah Ta'ala will grant strength. He will grant strength to your steps. And you will not realize at that time. Thank you So it so will much. change. It will change. Everything is going to change. And just get up. Up. Start with the most छोटी सी चीज, छोटी सी चीज. कोई कुछ भी कर रहे हैं आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, वो ठीक कर लें. आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप वो करने की कोशिश करें. मुश्किल होगा. सही It's बात not है। going to be easy, but there's a reason why Allah Ta'ala said that tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. And as women, it's important that we encourage one another. There are a lot of times that we see people faltering and ये हम नहीं बोलते हैं. सही बात है। Maybe that person needs a bit of encouragement. Maybe that person needs a friend to talk to, confide in. Maybe she wants to change. You सही know, बात है। try to talk to people. Have good friends. As women, please, let's encourage one another. Let's not put one another down. You see a non-hijabi wearing a hijab, go and talk to her and ask her. Maybe she wants to talk about her journey. So सही do बात है। it and be there for people. That's all that is going to matter once you die. We see it's, you know, it's over. You will be dead, and all that you will take is going to be your deeds. अच्छा मुझे ये That's it. बताओ कि एक मेरा पर्सनल सवाल है कि हम लोगों को जो है ना जज करने में बहुत ही सेकंड लगाते हैं। देखो Hmm. गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, राइट। Hmm. और उसके बाद जब हम सच्चे दिल से माफी मांग लें, एंड देन वी स्टार्ट यू नो वंस अगेन, और यू नो जैसे अगर हम, जैसे सपोज अब आप ये देखें कि एक लड़की है जो पर्दे में और हिजाब कर रही है, और दूसरी जो है वो
हमारी एग्जाम्पल ले लें, और मतलब एक ऑल ऑफ अ सडन अगर ये होता है कि जी वो लड़की हिजाब करना चाहे या वो हिजाब में नजर आ जाए, तो लोग हमारे बड़ी जल्दी उसको तोड़ मड़ोड़ के और बहुत जल्दी उसके ना रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, या बहुत जल्दी जज करते हैं लोगों को, और जमीन पे कहते हैं ना इनडायरेक्टली कि नाउजुबिल्लाह खुदा बन गए, लाइक they judge you and then they pass comments and तो what do you suggest us, या तुम अपने ऊपर कैसे इम्प्लीफाई करती हो? Do you judge people? Do you? मुझे I think मुझे, when I look at myself and then I think I should point a finger at this person, I literally just realize that, do you realize how stupid you are, and do you realize how incomplete, and you just shut up. Just shut up. Just you have so much to अच्छा, ये लास्ट है क्वेश्चन जायरा, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, थैंक यू सो मच यार, आपने इतना अपना कीमती वक्त हमें दिया। देखो टाइम जो आपने बात की है ना, कि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और आप मेरे शो पे आई और आपने आके मेरे जो है फॉलोअर्स से बात की। तो लास्ट क्वेश्चन ये है, सदफ से आया है कि एनी टिप्स ऑन स्टार्टिंग पर्दा, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट वेयरिंग अ हिजाब? just start. Just start. Just don't think about what I'm saying. Just start. And remember who you're doing it for. It's going to be tough. It's going to be tough. But it's a journey. Remember, guidance is a journey. And taqwa is a friend you make while you're on your journey of striving for it. So you walk. आप आज हिजाब कर रही हैं, आप कल को it will get better. Everything will get, move from that path. Stick to it. Have sabr. Have sabr. Because sabr is not just to keep quiet. Sabr is a lot of perseverance. Just do it. Go ahead and do it. Just go ahead. That's it. Thank you so much, Zaira. Thank you so much for for joining our session. I mean, I totally loved it, और I'm sure that मेरे followers को भी जो है, देखो हमें तो वो वाली जायरा वसीम पता थी ना, जो सीक्रेट सुपरस्टार में आपका, जो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ सीन वेयर यू वर वेयरिंग हिजाब एंड देन बुर्का एंड देन सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ दैट वाज एन एक्ट, ठीक है, व्हाटएवर, that is something which is gone. बट मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि हमने तो वो साइड ऑफ जायरा वसीम देखी थी ना, मेरे फॉलोअर्स ने या मेरे मेरे जो यहाँ पे व्यूअर्स आए हैं, इन लोगों ने दैट साइड ऑफ जायरा वसीम देखी थी, जो आमिर खान की मूवी में सीक्रेट सुपरस्टार में हिजाब पहन के खड़ी थी, ताकि उसको दुनिया ये ना कहे कि ये गाना गाती है, दैट वाज एन एक्ट, that was a demand of your character in that movie. बट ये जायरा वसीम जो रियल में है, जायरा वसीम ये आज पर्दा करके और बुरके में हमारे सामने खड़ी हैं, जो अल्लाह के लिए कर रही हैं, और जो यहाँ लोगों को आके मतलब लिटरली लाइक इट्स अ 360 टर्न। तो बहुत शुक्रिया सायरा आपका, हमारे फॉलोअर्स के पास आने का, आपका जो है वो मेरे Thank you इस for शो पे आने having का, me. थैंक यू Thank you. सो मच। एंड मुझे लगता है कि मेरे फॉलोअर्स आपको फिर देखना चाहेंगे। Oh. I hope inshallah we we do we can talk again. And this is something, the beauty of Deen is you cannot contain it within yourself. You meet people, you make friends, and this is all you want to talk about. You want to talk the Quran, and this is the thing कि आपके अंदर जो होगा ना, आप वही बात करेंगे. So once you establish a relationship with Quran and everything, and you want good for other people, you will just keep talking about this thing. And I don't mean for myself, for other people as well. I would love to know, like, what everybody has their own journey, every single person. So whoever is watching it, I hope that Allah Ta'ala makes this journey easy for you. And अभी अगर आपके लिए मुश्किल है, Allah Ta'ala की mercy ऐसी है that even in trials, and if you see it psychologically as well, that we take a lot of pride in our struggles, but not in the moment when we are in it. It's years later when we look back and think that, I went through that. And you're proud of yourself for it, or you're grateful for it sometimes. So if it's tough for you, if it's difficult for you, anything that you're trying to get close to Deen, people maybe are judging you, your friends are judging, your friends are leaving you, maybe कुछ लोगों की तो family नहीं होती supportive, family छोड़ देती है, but you have to remember who you're doing it for, and when it gets difficult, all your answers are in the Quran. All your answers are in the Quran. There are stories, and they're not mere stories.
you see Ibrahim alayhi salam की कहानी जब आप सुनते हैं, you see his struggles, it's not just a story, it's a reminder